Assalamualaikum dear students, this is Ms Sana Assalamualaikum dear student, this is Sana Riyasat. I welcome you all to YouTube channel of Multan Public School and College. Today we are going to study chapter number 6 from Right Byte 6 for class 6, and chapter name is Introduction to Windows. The following content we are going to cover in this chapter, that is GUI, the desktop, working with Windows, what are files and how folders are created, how to copy a file, how to drag a file, moving, deleting, what basically we are playing with files, okay, files and folders. And at the end we will discuss that what is shortcut, how are they created, and what are the purpose of the shortcut key. What is GUI? GUI is the that is graphical user interface, enables the user to give command through icon and pull down menus. Icons होते हैं आपके, मैं अभी दिखाती हूँ आपको. Icons is just like the symbol of an app, ठीक है. It is the logo होता है ऐप का, just like your WhatsApp. जिस तरह आपका WhatsApp का होता है, आपके Facebook का होता है, आपके MS Word का होता है, आपका PowerPoint का होता है, सेम लाइक दैट इज दैट आइकन. एंड पुल डाउन मेन्यू होता है, जैसे कि आपको मैं शो करती हूँ मेन्यू लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई डेस्कटॉप. This is my desktop, and this is the start, and this is the menu. All right, pull down menu, like this menu in which there are lots of things and you have to choose any one. And these are the icons, like my WhatsApp, my recycle bin, Acrobat Reader. This is my Opera, ठीक है, and this is my Chrome, PPT, all like this, ठीक है. Next is the most popular GUI based is operating system is Microsoft Windows. The most popular example जो है आपकी GUI की that है वो है आपका Microsoft Windows. अब Windows load automatically when the computer is started. अब जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन ऑन करती हूँ, मेरी विंडो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाती है, ठीक है. उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग पोजीशन में आ जाता है. आफ्टर विंडो as completely loaded, जैसे ही विंडो completely loaded हो जाती है, स्क्रीन called the desktop is appear. आपका स्क्रीन जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं वो सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, वो अपीयर हो जाती है लाइक दिस इज द डेस्कटॉप, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, as you can see in the picture, the desktop is the workspace where important tools are loaded. I have placed the picture in which you can see that a window, ठीक है, a window background and this drop down menu with multiple icons. All right. Next is the pointers. What are the pointers? Microsoft Windows allow the user to use a mouse to give commands. The mouse moves a pointer on the desktop to select icons and menu. See, now I am using my keyboard while moving the slides, ठीक है. Either I want to use mouse or keyboard, it's up to me. So हम अपने pointer use करते हैं, अपना mouse use करते हैं to drag the things, to click the things and different functions. Like अब मैं आप लोग, as you can see the picture, that is giving you a mouse pointer arrow, desktop, notification, जैसे कि आप देख सकते हो. that the lower bottom is the task bar, full bottom, ठीक है. और task bar के अंदर ही आपके पास 3 components हैं. One is the start button, ठीक है, जहाँ पे आप जाके मेन्यू खोलते हो, ठीक है. सेकेंड इज द क्विक लॉन्च. क्विक लॉन्च का मतलब होता है जो रीसेंट आपकी चीज़ें वहाँ खुली होती हैं, रीसेंट कह लो या आप कह लो क्विक लॉन्च, के आप जिससे आपने एक शॉर्टकट रखा हुआ है अपना, कि जैसे ही आपको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, वो चीज़ आपके सामने ही पड़ी हो, ठीक है. तो जैसे अब इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग वेयर द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज प्लेस्ड इन माई कंप्यूटर,
instead of that, I just go in the quick launch and click the icon of Internet Explorer and just start working. So it is less time taking. ठीक है. सेकेंड थर्ड थिंग इज़ टास्क बार. टास्क बार में क्या होता है, आपकी तमाम नोटिफिकेशन एरिया, क्विक लॉन्च, स्टार्ट बटन और तमाम आपके वो ऐप्स जिन्हें आपने मिनिमाइज़ किया होता है या आप जो वर्किंग कर रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें आपकी टास्क बार में आ जाती हैं. नोटिफिकेशन एरिया में आपके आप देख सकते हो अपने लैपटॉप्स पे, जहाँ पे टाइम, डेट, बैटरी, आपके वाईफाई सिग्नल्स का बता रहा होता है. दैट एरिया इज़ द नोटिफिकेशन एरिया. इनफैक्ट आपके मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन एरिया होता है. ठीक है. उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्च उस पर आते हैं, शट डाउन ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट्स एंड आइकन्स. अब देख रहे हो आप, एज यू कैन सी द आइकन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर. The objects and icons. The program and files on the desktop are called objects. Each object is represented by an icon. An icon is a picture or the symbol that represents a program or file. एक सिंबल होता है, एक पिक्चर होती है जो आपकी फाइल को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, कि ये किस चीज़ की फ़ाइल है. सपोज़ अगर मेरे पास माई कंप्यूटर मुझे देखना है, तो अगर मेरे पास ना भी लिखा हो, तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ आइकन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है आइकन किस चीज़ का है. इज ऑफ माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई रिसाइकल बिन और वट एवर. ठीक है. टास्क बार का मैंने आपको बता दिया. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप एट द लेफ्ट एंड. इट हैज़ अ स्टार्ट बटन. क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्लेस द स्टार्ट मेन्यू. इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं. ड्रॉप डाउन बेसिकली इज़ लाइक, आप कुछ भी सर्च करो, आप कुछ भी क्लिक करो ना, और उसके नीचे मेन्यू खुल जाता है. सपोज़ मैं आपको दिखाती हूँ. व्हेन वी क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है, like this, if I click on right click, ये देखिए ये जो मेन्यू खुलता है ना, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है. अब ये वाला जो मेन्यू है, दिस इज़ सिंपल मेन्यू, क्योंकि और ये वाला जो है दैट इज़ टॉप ड्रॉप डाउन, के नीचे की तरफ इसका मेन्यू खुल रहा है. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव कि ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, हमारा टास्क बार हो गया. नाउ आई विल टेल यू कि ऑल प्रोग्राम्स. अब देखो आप आपको एक साइड पे ये दूसरे इसमें ऑल प्रोग्राम्स का नज़र आ रहा है. ऑल प्रोग्राम्स कौन से होते हैं बेसिकली, लेट मी शो यू ऑन डेस्कटॉप. ये देखो, ये जो मेरी विंडोज़ है ना, दीज ऑल आर माई प्रोग्राम्स. ठीक है. माई वर्जन इज़ डिफरेंट, दैट्स वाई आपको उस तरह पिक्चर वाला नज़र नहीं आ रहा. वो जो वर्जन है जो पिक्चर में यू पीपल आर वॉचिंग, दिस वन, दिस वर्जन इज़ बेसिकली विंडोज़ 7. ठीक है. और जो मैं आप लोगों को अपना दिखा रही हूँ, दैट इज़ दीज ऑल आर दी प्रोग्राम्स. ठीक है. जहाँ पे मेरे देखो, अब ये स्क्रॉल डाउन में नीचे कर रही हूँ, तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स विच, so it means कि this is menu is the drop down menu, and this is called all programs. All right. Next we have search. Search bar कहाँ पे होगा? Search feature allows user to find and open a program or file by typing its name. Simply जहाँ पे आप जाके अपना सर्च करते हो, that is search bar. मैं दिखाती हूँ आपको. इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ. सी, ये वाला जो आपका है ना, दिस टाइप हियर टू सर्च. मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करती हूँ तो इट विल शो मी द रिजल्ट. ठीक है. अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं. देन वी हैव shutdown. Shutdown allow the user to shut down the computer. The right end of the taskbar contains a notification area. This area displays the time, date, volume, setting, and the computer. This area is the notification area in which I can see my time, date, my keyboard, volume, battery, okay, and what else? The space between the start button and the notification area is called a display, a tab for each of the window. अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने खोली हुई हैं. ठीक है.
जिन पे ये जो बार बनी हुई है ना, दिस जो लाइट ब्लू लाइट बनी हुई है, इट मीन्स कि ऑल दीज थिंग्स आर ओपन, आई हैव ओपन ऑल दीज थिंग, ठीक है. So these and I have minimized the Google Chrome, this my file floor folder. So and the rest of the, so all these things are appearing in my taskbar, ठीक है. Whereas all these things like Opera, this driver booster, this Play Store are, I have placed them in my quick launch, ठीक है. Next is the computer option or icon opens a window giving information about the drivers and the peripheral devices. A drive is a part of computer's memory. अब my computers क्या करता है? Let me show you that. Where is my computer? As I have not placed that icon क्योंकि मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, so I will search here कि where is my computer. सी दिस इज़ दिस पीसी और माई कंप्यूटर, ठीक है. यहाँ पे जाके वो ये बताता है कि आपके पास कितने ड्राइव्स हैं. सी आई एम हैविंग 3 ड्राइव्स. ये जो लोकल डिस्क सी होता है, डिस्क ई, डिस्क एफ, दीज आर बेसिकली द ड्राइवर्स, ठीक है. ये इसके अंदर आपकी पार्टीशन की गई है. दीज आर नॉट, सॉरी, ड्राइवर्स, दीज आर द पार्टीशन डिस्क स्पेस है आपकी ये, ठीक है. और इसके अंदर local disk contain all the important files of my laptop, ठीक है, which must not be deleted at all. So it contains the important files and the drivers, जो आपकी devices आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, उन तमाम devices के drivers मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है. Next we have recycle bin. Recycle bin icon open a window that displays all the deleted items. I can show you my recycle bin. See, it's here. All these things are the deleted items of my laptop. See, there are lots of things, but make sure कि you must delete them off and on, क्योंकि फिर वो आपकी स्टोरेज बन जाती है, ठीक है. सपोज अगर मुझे डिलीट करनी है, वो डिलीट करने के लिए what should I do? Just click on this like and press the delete button. Yes, ठीक है, वो आपकी डिलीट हो जाएंगी. Next we have shutdown. Okay, now we are done with the document folder contain files and folders. I can show you my document folder, like where it is. Let's search for the document folder, okay. So you come to know how to search file. Documents. See, if I search from here, I can find it document as well, okay. It is also a part of my searching, okay. There are the folders, this yellow icon, this yellow book icon, you can say, is basically a folder indication. और जबकि जो दूसरी फाइल्स हैं, ये जिस तरह टाइप ऑफ नोट, ठीक है, नोट पेज, इट मीन्स कि दीज आर द फाइल्स के अंदर और पेजेस नहीं होते हैं, जबकि फोल्डर्स के अंदर आपके पास पेजेस होते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बुक, ठीक है. अ बुक इज़ अ फोल्डर विच कंटेन लॉट्स ऑफ पेजेस, ठीक है. और पेजेस जो हैं दैट आर द फाइल्स, ठीक है. मतलब जो बुक आपके पास है वो फोल्डर होगी, और जो बुक के अंदर पेजेस हैं आपके, दैट आर द फाइल्स. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव what is drive. It is a part, it is a part of the computer's memory. It is the part of the computer's memory. Sorry for the interruption, if I make it right. Yes, it is the part of the computer's memory, ठीक है. Next we have recycle. अच्छा, see, I have placed the icons just for your information. Like लाइब्रेरी का आइकन आपके कंप्यूटर में ऐसे शो हो रहा होता है, दिस इज ओरिजिनल लाइब्रेरी एंड द एरो विद आइकन विद द एरो, दिस टाइप ऑफ एरो, इट मीन्स दिस इज शॉर्टकट की, ठीक है. आई विल टेल यू शॉर्टकट्स लेटर. दिस इज द डॉक्यूमेंट, सी, a type of book opened with a page. Internet Explorer,
and recycle bin. Now I'll tell you working with windows, how to work with windows. Opening a window, there are three ways of opening a window. First of all, let me tell you कि window होती क्या है. A window is a rectangular area that displays a document or program. Several, okay, कोई भी एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट प्रोग्राम कुछ भी शो कर रहे होते हो, उस पर वर्किंग कर रहे होते हो, ठीक है. Opening a window, there are three ways of opening a window. You can double click on the icon if it is present on the desktop. आप किसी भी डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम खुल जाएगा. You can select the file or program from the start menu. As I told you कि आप start menu से जाके भी search कर सकते हो. You can type the name of the file or program by using the search feature. और आप वहाँ जाके कुछ भी search करोगे तो you will come to know कि वो file किधर रखी हुई है. Now at the end, I'll tell you what is active window and what is inactive window. Active window is like the window on which you are working right now, ठीक है. And whereas inactive window is the beneath the active window. So I'll tell you कि normal उसमें हम कैसे इसको करते हैं. Suppose this is my active window. I'm working a PowerPoint and same here if I open this, ठीक है. इसके ऊपर ही मैं कुछ और खोलती हूँ. Suppose like this. See. Now this recycle bin is my active window and this is my inactive window. Active window इसलिए है क्योंकि I am working on this tab right now, ठीक है. Whereas if I go on inactive window, my active window will disappear. Suppose see, if I click on this, it will disappear. So active window is always that window in which you are working in the present way. Next is title bar. Title bar displays the name of the file that has been opened. Up see, as you can see in the PowerPoint, that this is the title bar where chapter 6 class 6 computer active PowerPoint product, ठीक है. ये भी चीज़ जहाँ पे लिखे होते that is the title bar. अब as you can see in this picture, that the upper one where the library is written, text pad written, this is the title bar, okay. Rest of the things like the file menu bar where the file ribbon, this is called ribbon basically, where file, edit, search and all these things are written. Maximize, minimize button, I'll tell you further. This is the toolbar, vertex scrolling part, okay. Horizontal scrolling, status bar. Okay, what is maximize button? Maximize, I hope all of you have known this, are well known about this button. Maximize button is the maximize button on the title bar enlarges the window to fit the screen, and then maximize button becomes the restore button, ठीक है. इसको हम restore भी कहते हैं और इसको maximize भी कहते हैं. both are fine. एक दफ़ा maximize कर देते हो फिर उसे restore करते हो, अपने वापस position पे आ जाता है. Close button का आप सबको पता है to exit, and minimize button is to put that file in the status bar, ठीक है. Suppose अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ on this document, I'll make it see restore down, छोटा हो जाएगा. एंड इफ़ आई वांट इट मैक्सिमाइज, ये बड़ा हो गया, ठीक है. पहले वो अपनी पोजीशन में आया, अब फिर वो पूछता है कि आप डू यू वांट टू रीस्टोर, फिर वो छोटा हो जाएगा. दिस इज मिनिमाइज. इफ आई मिनिमाइज इट, इट विल गो डाउनस्टेयर्स. सी, ठीक है. I hope you understand the points. So this is all for today. If you have any queries, please contact me. Thank you very much. Allah Hafiz.